Bismillahirrahmanirrahim. 101 or 2 days to your Cambridge International Examinations. और मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल ऑलवेज बी हाउ यू हैव ऑलवेज बिन। तो आप में से जो लोग परफॉर्म नहीं करते उन्हें इस बार कुछ मुख्तलिफ करना है ताकि उनका मुख्तलिफ रिज़ल्ट आए। मुख्तलिफ रिज़ल्ट के लिए मुख्तलिफ एक्शन लेना होगा आपको। वीकेंड है और इस तरह के बहुत सारे अपकमिंग वीकेंड्स हैं जो आपके पास हैं अभी। प्रोबेबली 12 to 14 वीकेंड्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मिलेंगे। ये जो वीकेंड है सैटरडे संडे, ये 48 आवर्स और इस तरह के आने वाले बहुत सारे वीकेंड्स, दे कैन एक्चुअली मेक अ ह्यूज डिफरेंस in the kind of the results that you earn and in the respect that you can gain. You can have the moments of pride and the moments of joy, the moments of happiness, the moment of high self-respect, high self-esteem, and the moments of appreciation and the moments of smiles on your parents' face. If you make all this time count, if you focus, if you concentrate, and if you stay away from the distractions, and if you spend time in a way that helps you achieve more in your studies, तो इंशाल्लाह ताला आप अचीव कर लेंगे। I wish you very best of luck. Thank you very much.